So, good morning, friends. We are into our last unit, that is unit number 6. This unit has these two part divided into the syllabus. The first part deals with the groundwater recharge, the concept of recharge, selection of site, recharging methods, etc. Because we want that you should know all the recharging methods as well as how the wastewater which is produced after a treatment, how it can be used for recharge. Then the rainwater harvesting, that is also included in this part. And the second part of this unit deals with the project planning for water resources. Friends, we construct a lot of the dams and the reservoirs, so therefore we should know what is the type of the planning that is to be done. The multi-purpose projects, because now the projects or these reservoirs are not constructed for only one purpose. Earlier it was done, it was to be done that the project was constructed a reservoir for the drinking purpose, for the hydroelectric purpose, only for irrigation purpose, like the Pench project at the Parshuni. It was earlier constructed for the irrigation purpose only. The two canals are there, right bank canal and left bank canal, and that canal was to supply the irrigation water for Nagpur district, Bhandara, some part of the Gadchiroli and Gondia. But now, later on, as the demand of the drinking water from Nagpur city arrived, then some of the water of the irrigation is being diverted for the Nagpur drinking purpose. So therefore it is called, such projects are called as the multi-purpose projects. So therefore the multi-purpose projects is being included. Inter-basin water transfer, that is the river linking, and the interstate river dispute. Inter-basin water transfer है ना, बेसिन यानी नदी का कैचमेंट या रिवर, तो एक रिवर में से दूसरे रिवर में पानी ले जाना, या एक बेसिन में से दूसरे बेसिन में, एक कैचमेंट से दूसरे कैचमेंट में, इसलिए उसको इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर करके बोलते हैं, और जिसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स करके बोलते हैं. और आखिरी में है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, वाटर रिसोर्स प्लानिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट, and there are certain instruments we want that you should know. So this is the syllabus of this unit. We have seen in our earlier unit number 5 that the groundwater occur below the surface of the soil and subsurface also of the soil due to the nature of the soil, that is the porous nature of the soil, or if the rock is there, then the fractured nature of the rock, or both porous and the fractured nature of the subsurface is the cause of the percolation of the precipitated water, and that percolation we have called as the infiltration. This we have seen in our last lecture, in our last unit, how the groundwater occur. And as it is the groundwater means water which is available below the ground surface. And if you go through the sketch here,
you can see or you can revise what you learned in your last unit. And we have also studied that this subsurface where the groundwater occurs is divided into two zones. The first is the vadose or the unsaturated zone or the zone of aeration, the top zone below the ground surface, where generally in the soil pores, in the soil voids, air is present and certain water vapor is present. And very few quantity of the water is available in this vadose zone or unsaturated zone. But below this zone of aeration, vadose zone or unsaturated zone, the another zone is available that is called as the phreatic zone or saturated zone or zone of saturation, where the water is abundantly available. If it is unconfined aquifer, then the water, the topmost surface of the water available is called as the water table. That is the top of that unconfined aquifer, and the bottommost part of the unconfined aquifer is impermeable rock. Okay, this we have studied, and also we have studied that for confined aquifer, that is which is confined between two impermeable stratas. Again, aquifer means water reservoir below the ground. So in confined aquifer, which is also available in the zone of saturation or the phreatic zone or the saturated zone, where in the pores of the soil water under pressure is available. This bit revision we have done. Now, where from this water comes into the confined aquifer or into the unconfined aquifer? That occurrence or that percolation or that addition of the surface water due to the rain or precipitation to this zone of saturation is called as the recharging of groundwater. The definition. That is the addition of the surface water due to the precipitation to the zone of saturation, that is to the unconfined aquifer as well as confined aquifer, is called as the recharging of the groundwater or recharge in short. This is not a difficult term nor it is new. All this unit is a type of knowledge which is available to you. It is not new to you. Only thing is we are we are again recharging your knowledge, or we are again trying to refresh your knowledge in scientific way. हमें सबको मालूम है ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है. All these things we are very much aware of. Only thing is we are trying to understand it from scientific or technological manner. So this groundwater recharge, as I have just told you, is nothing but the addition of the surface water. Again, from where the surface water comes? The surface water comes from the precipitation or the rainfall. That is addition of the surface water from the precipitation or rainfall to the zone of saturation is called as the recharging of the groundwater. And what is zone of saturation? Just now we have tried to revise it. Now this recharging of the groundwater is done in two ways, or there are two types of the groundwater recharge.
The first is natural recharge and the second is artificial recharge. The first is natural recharge and the second one is the artificial recharge. You can see here on the right side, as per my regular practice, I try to show by the sketch or by a certain photograph. All hydrological cycle is shown here. From unit 1 we are trying to understand. And whatever water that infiltrates from the precipitation, after the infiltration, the water moves below the ground surface into the ground surface due to the gravitational force and also due to certain surface tension and the capillary action into the pores of the soil, moves downwards, reaches to the unconfined aquifer or reaches to the confined aquifer also at certain, when the water percolates from certain locations where the unconfined aquifer meets the ground surface, and in this way these two aquifers, that is the unconfined and the confined aquifers, get the rainwater via percolation or infiltration, and they get recharged. So this recharging is done by the two ways, that is natural and the artificial recharge. So when this recharge of the groundwater takes place naturally as a part of hydrological cycle, then it is called as the natural recharge. We have seen the various components of the hydrological cycle, from evaporation to again runoff and the re-evaporation, evaporation to evaporation. इसके बीच में evaporation, formation of the clouds, transportation of clouds due to the winds, condensation, water drop formation or the rainfall or the precipitation formation due to the condensation of the nuclei, and then precipitation occurs over the ground surface, then infiltrated water again converts into the two runoffs, that is the subsurface and the base water or the groundwater flow, and this groundwater flow is nothing but the groundwater recharge. When all this takes place in this natural way, in this hydrological cycle way, then this type of the recharge is called as the natural recharge. Okay, natural. But sometimes this natural process get disrupted due to the over use of the groundwater. Then we need to recharge this groundwater by additional human efforts. Then the additional efforts which are other than natural recharge methods taken by the human beings, that is the process of increasing this infiltration of the surface water to the groundwater system by altering or by changing certain natural conditions, is known as artificial recharge. And we are more interested in this artificial recharge. है ना, natural recharge तो naturally होता ही है. But when we are extracting more water than what is being naturally recharged, then those aquifers needed to be artificially recharged. Again, artificial recharge करने के लिए कोई हम खुद थोड़ी प्रॉपर वाटर प्रोड्यूस करते हैं.
अगेन बाय ऑल्टरिंग सर्टन नेचुरल कंडीशंस. जो भी रेनफॉल आता है उसको ही फिर से हम रीयूटिलाइज करके कैसे और यूज करेंगे, या कहीं पानी बेकार बह जाता है नदी में से समंदर में जाता है तो उस all that water is to be used for the recharging purposes by altering, as has been said here, certain natural conditions. Through this photograph again you will be very well understand how what is the recharge and what is the discharge. Recharge is the process by which the groundwater is replenished and refilled or recharged. Okay, replenished means refilled or the recharged. So it is called as a recharge by which the groundwater is replenished or refilled. And discharge is the process by which groundwater reaches and flows to the surface. Groundwater, when it is taken out either by the pumping to the surface of the soil, or when it reaches to certain streams, when the groundwater table is above the river bed level or the stream bed level, then this groundwater is being supplied to these streams. Then also this we lose certain groundwater. That is called as the discharge. Then the recharge area. An area of the landscape or the soil or the topography. The area of the landscape where the precipitation seeps or percolates or infiltrates downwards and reaches an aquifer is called as the recharge area, as has been shown here. And the stream area or the river part is called as the discharge area. Recharge area and the discharge area. The water moves slowly toward discharge area where groundwater flows to the streams, lakes, ponds, swamps or the ocean. Now the natural recharge we will try to understand. The amount of the precipitation, that is the rainfall or the snowfall, the amount of precipitation that infiltrates into the soil and reaches the zone of saturation is an important component of the natural recharge. So whatever part or percentage of the precipitation, rainfall, when it percolates into the soil and moves downwards towards the aquifer via infiltration, via percolation by the ground, by the gravity pressure, gravitational force, and reaches to zone of saturation is called as the natural recharge. In natural recharge, there is another type of the recharge, that is recharge from the irrigated lands. Sometimes through the dams or through the wells, we supply water for the agriculture purpose on the land. Then this water 100% is not utilized by the plants, nor it gets evaporated, but some water percolates into the ground and again recharges the groundwater flow or the aquifer. This type of the recharge is called as the incidental recharge, in which the infiltration process is a natural process. Only the supply of water is not by the rainfall or precipitation, but it is the irrigation water through the soil. Though we supply irrigation water by artificial means, that is through canals or through pumps through the well, but such type of the recharging is called as the incidental recharge. One of the definitions sometimes they may ask into the exam. What is incidental recharge?
Other types of the natural recharges are the seepage from the reservoir, that is the dams or the tanks or the ponds, seepage through rivers. River is nothing but the flowing channel through the streams, smaller than the rivers, small nalas, canals, the irrigation canals, and other water bodies like the ponds, etc. So these all comes under the natural recharge. Now, what is artificial recharge? Is the process by which the groundwater is augmented, that is supplied or refilled at a rate much higher than those under natural condition of percolation. So when we recharge artificially, then that recharging is much faster than the natural recharging, wherein the groundwater, which may be in the aquifer of confined or unconfined type, is directly supplied with the water. And these both these aquifers are refilled with the water or recharged. But this all process occurs not naturally, not through the natural precipitation or rainfall and the percolation or the infiltration, subsurface, groundwater flow or the base flow. Not through that hydrological cycle process, but other than hydrological cycle and other than the irrigation or the incidental recharge, by supplying the water through the wells, by supplying the water through the pipeline, etc., then such type of the recharging is called as the artificial recharge. Here you can see in this sketch, wherein the natural recharge from precipitation is also shown on the left side, and the artificial recharge through the pipeline, the water is being forced to percolate through a recharge well is being shown, and this water is being transferred through these aquifers. So artificial recharge is the process of artificial enhancing or increasing the amount of the water recharging the aquifer in the given location. जहां पे हमें जो लोकेशन से, जो एरिया से पानी हमें आर्टिफिशियली with the help of certain means, with the help of the pipes, pumps, etc., to the aquifer to enhance or to increase the aquifer water is called as the artificial recharge. Why artificial recharge is so important? Why it has got so importance? नहीं किया तो नहीं चलता क्या? सिर्फ पानी निकालते रहेंगे उसमें से, न कुएं में से पंपिंग करते रहेंगे, जाएगा पानी नीचे में, तो ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आज के जमाने में, though it is a controversial subject or controversial issue, that our population is increasing in geometric proportion. हमारी जो लोक संख्या है वो दुनिया में अभी नंबर 2 पे है, और 2050 तक के हम नंबर 1 पे चले जाएंगे. चाइना नंबर 1 पे है, उससे भी आगे चले जाएंगे. तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है. पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो लोगों को पीने के लिए और रेगुलर उनके यूज के लिए पानी चाहिए, है ना. आपको मालूम है 150 से 200 लीटर पर डे is the WHO limits of the water requirement. And the water is not only required for drinking and for the day-to-day consumption, but also they need certain food. They need the anaj.
and then for growing or harvesting those crops also water is needed. So therefore, in present day situation, large demand for groundwater is there, and as the source and the water availability is limited, जमीन के नीचे कोई बहुत थोड़ा पानी है, जितना है उतना यदि हमने निकाल लिया तो वो पानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द रन ऑफ। जो रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ which flows to the river, and then through river it goes to the ocean or to the sea and it is wasted. So that water needs, that runoff needs to be conserved or saved somewhere. हम करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, we construct the dams, that water should be stored or conserved. Also, by recharging the groundwater also, we can conserve the runoff. Again, this groundwater recharging is useful to improve the quantity of the available groundwater as well as quality. क्वांटिटी भी बढ़ाने के लिए हमें रिचार्जिंग उपयोगी है, और जो बरसात का पानी बह के जाता है रन ऑफ में, उसको भी बचा के रखने के लिए, कॉन्जर्व यानी बचा के रखना, वो भी हमें ये रिचार्जिंग से हम वी कैन अचीव, as well as to improve the quantity of the groundwater and to reduce or correct the salt water intrusion. है ना, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे यदि कम होते जाएगा तो वो सॉल्टी या सलाइन वाटर बढ़ते जाएगा। अब सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिचार्ज साइट्स, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जाम, हाउ विल वी आइडेंटिफाई कहाँ रिचार्ज होना चाहिए, कहाँ रिचार्ज करना चाहिए, कौन से एरिया में रिचार्ज करना चाहिए, where the groundwater levels are declining due to over exploitation, जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल या पिज़ोमेट्रिक सरफेस दोनों बहुत नीचे जा रहे हैं झपाटे से, अपने आप बिल्कुल नहीं जाते। नेचर जो है, नेचर अपने आप कभी इम्बैलेंस नहीं करता, निसर्ग जो है वो ऐसे अपने आप वाटर टेबल नहीं कम करता, वो हर साल बराबर उल्टा रिचार्जिंग ही करता है नेचुरली। मे बी अनकन्फाइंड, मे बी कन्फाइंड एक्वीफर। कौन करता है? हम करते हैं, ह्यूमन। We human are playing with the nature, therefore we are facing all these problems. One of the problem is corona. तो ग्राउंड वाटर हम बहुत निकाल रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं आपको हरदम एग्जांपल देता हूं कि हमारा काटोल तालुका, नरखेड़ तालुका, सावनेर तालुका बहुत संतरे के बगीचे हैं, और संतरा क्योंकि कैश क्रॉप है, पैसा मिलता है उसमें से, तो उसको पानी भी लगता है, लेकिन तो उसमें ग्राउंड वाटर बहुत उसमें से पंप किया जाता है, और इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल के तो अभी नीचे चले ही गया, तो पिज़ोमेट्रिक हेड भी अभी नीचे नीचे जा रहा है। अब ये फिर से इसको ऊपर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वो कहाँ रिचार्ज करना है फिर हमें? तो वो जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल या पिज़ोमेट्रिक सरफेस are declining due to the over exploitation. Exploitation and overuse, over pumping out, where substantial part of the aquifer has already been desaturated, यानी एक्वीफर पूरे खाली हो गए हैं, dessaturate हो गए हैं। That is, regeneration of water in wells and hand pumps is slow after some water has been drawn, है ना। एक्वीफर में से पानी खत्म हो गया तो जो वेल है, मे बी ये ओपन वेल और मे बी ये बोर वेल या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, इसमें नेचुरल रिचार्ज होना बहुत समय लगता है उसको।
It may take years together to naturally recharge and to bring it to its original groundwater availability. So therefore here at such locations where the aquifers have dried, there this recharging is necessary. And where the water, in the extension of this again, where the water availability from the open wells as well as hand pumps is inadequate during the lean months. लीन मंथ यानी दुबकाला, या लीन का मतलब होता है जिसमें कम पानी की मात्रा, जिसमें लोअर क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज अवेलेबल. Lower quantity, lean means lower quantity, you can say. Lean month means where the quantity of water is available in lesser units. And when this happens in the summer. दुबकाले में, वेल्स में और हैंड पंप में पानी नहीं रहता है ना. टीवी के ऊपर आप देखते हैं लोग वो कुएं में उतर रहे हैं नीचे से, और वो मग्गे से या लोटे से पानी निकाल के, पानी बकेट भर के उससे पानी यूज कर रहे हैं. अरे भाई ये स्थिति हम नहीं लाई. Nature has not brought this condition. We have over exploited the groundwater. Therefore, in summer we have to run helter and shelter for the drop of water. है ना. आप में से कुछ लोगों को जिनके एरिया में बारिश कम आती है उनको ये प्रॉब्लम जाता ही होगा. धूपकाले में पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने पड़ता है. तो इस एरिया में रिचार्जिंग करेंगे. और वेयर ग्राउंड वाटर क्वालिटी इज पुअर एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर, है ना. बहुत सारे हमारे यहाँ पे कुछ एरियाज है, अकोला डिस्ट्रिक्ट में है, या कहीं तो भी मलकापुर वगैरह की तरफ में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में वगैरह. पूर्णा रिवर जो है उसके ऑल अलोंग दैट सम पार्ट ऑफ दैट पूर्णा रिवर द सलाइन बेल्ट इज देयर. या हमारे इधर और कुछ एरिया इधर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में कि वहां पे सलाइन है और फ्लोराइड बहुत ज्यादा है. तो उनकी यदि इंटेंसिटी और उनकी क्वांटिटी कम करना है तो वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज यदि हमने किया so it will improve the groundwater quality. So at all such locations, at all such areas, we needed on priority the groundwater recharge. So such sites to be located and then identified, and then the recharging of the groundwater is to be planned there. What are the advantages of the artificial recharge? To enhance the groundwater yield in depleted aquifer due to urbanization. Enhance यानी increase the groundwater yield. Yield यानी water that can be taken out. So to enhance or to increase the groundwater yield, which is already depleted, which has already decreased into the aquifer due to urbanization यानी शहरीकरण. शहरीकरण होने से ग्राउंड में का पानी बहुत निकाल लिया गया है. कंजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ द एक्सेस सरफेस वाटर फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, है ना. सरफेस वाटर जो सरफेस रन ऑफ है ये नदी में बह के जाता है, नदी से समंदर में जाता है और वेस्ट होता है. तो उसको बचा के रखने के लिए, उसको कंजर्व करके उसका स्टोरेज करना, इसके लिए हम ये आर्टिफिशियल रिचार्ज के एडवांटेजेस है. To improve the quality of existing groundwater through dilution. Existing groundwater जो है इसमें समझो कोई सॉल्ट है, इसमें कोई फ्लोराइड्स है, इसमें कोई क्लोराइड्स है, या और कोई मटेरियल which is dangerous for the human health, that can be improved by percolating the fresh rainwater. To remove the bacteriological and other impurities from the sewage and wastewater by natural filtration so that water is suitable for reuse. जो वेस्ट वाटर है, जैसे नागपुर का लाखों लीटर का पानी रोज तैयार होता है. आप
क्या काउंट कीजिए, 10 से 15 लाख पॉपुलेशन है नागपुर की, हर एक जन कम से कम 100 लीटर तो पानी दिन भर यूज करता है, उसका 50% वेस्टेज पकड़िए, 50 लीटर, तो 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50 लीटर, लगभग 775 लाख के आसपास आ जाता है। तो इतना पानी हमारा वेस्ट होता है नाग नदी से बह के, नाग नाला बोलेंगे। तो इसलिए क्या है कि वो भांडेवाड़ी में ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और ये वेस्ट वाटर में से अच्छा पानी जो है उसको सेपरेट आउट करते हैं और उसको कोराडी थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम, मुझे मालूम। So again, by removing the bacteriological and other impurities from that sewage, that is the wastewater, by the various treatment methods, and that water can be reused for the recharging also, artificial recharge purpose. So these are the advantages of the artificial recharge. Now we will move on to the various recharging methods. है ना, ये 7 इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमारे सिलेबस में भी है और जिसके ऊपर एक आधे बार या रेगुलर हर साल ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी मेथड के ऊपर में नोट्स आती है, शॉर्ट नोट। हम तो अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज समझते जा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से भी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन you have to write down your answers. So recharging methods, there are 7 main methods. There are numerous methods, but 7 out of that methods are being taken for our study. The first is the spreading method. The second is the induced or indirect recharge method. Third is the recharge well method. फोर्थ इज सब सरफेस डैम्स, है ना। डैम्स जो है वो हमने सरफेस के ऊपर तो देखा है, लेकिन सब सरफेस यानी जमीन के सरफेस के नीचे भी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या डैम जैसा, कि विच विल बी हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर फ्लो और द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सो सब सरफेस डैम्स। वेस्ट वाटर रिचार्ज, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, Nagpur produces more than 75 lakhs of the wastewater daily, and that water is being wasted through the Nag Nala, etc. Some part is being reused for the Koradi thermal power plant. So that wastewater recharge is very important. One of the method of the recharging of the groundwater. Recharge by urban storm runoff. बरसात में, बरसात का जो पानी रहता है सिटी या शहर में, उसको जो टाइप है या जो उसकी मेथड है, दैट इज रिचार्ज बाय द अर्बन स्टॉर्म रन ऑफ एंड रिचार्ज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विच इज ए इंडिपेंडेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। अगेन with the help of certain sketches, I tried to understand you that again this is the ground surface at the top, precipitation occurs, some water infiltrates to the unconfined aquifer, and the water into the unconfined aquifer increases in the form of the increase in the water table, groundwater table. Also through certain recharge areas where this confined aquifer meets to the ground cross section, that area which is a percolated area, which is a permeable strata, which recharges or the water through it is reached to the confined aquifer. So all this is being taken out through all these 7 methods. We will discuss one by one. The first is the spreading method. As the name suggests, the water which is available may be a
rainfall water, or maybe a water into the channel, or maybe a water into the stream, or maybe a water into the river, which if not conserved or preserved into the groundwater, then it will be wasted into the sea. Ultimately all the rivers meets to the sea, समंदर को मिलते हैं सब नदियां, और समंदर में जाने के बाद में फिर वो कोई रीयूजेबल नहीं रहता है। तो ये स्प्रेडिंग मेथड में क्या किया जाता है कि जो चैनल है या जो नदियां है, ये नदी में कुछ ना कुछ तो भी ऐसे बदलाव कर किए जाए ताकि पूरा के पूरा पानी ये समंदर में बह के ना जाए। सो स्प्रेडिंग विद इन द चैनल, स्प्रेडिंग स्ट्रीम वाटर थ्रू द नेटवर्क ऑफ डीचेस एंड फरोज। नदी का जो पानी है, ये नदी का पानी नदी के बाजू में कुछ नालियां बना के, जिसको हम डीचेस और फरोज बोलेंगे, बाय एक्सकवेटिंग सर्टन डीचेस और द फरोज, और बाय एक्सकवेटिंग सर्टन पीट्स, गड्ढे भी खोद सकते हैं, और ये नदी का पानी उसमें लाके छोड़ेंगे बाय ग्रेविटी, नॉट बाय पंप। तो पुराएगा नहीं पंप से उसको ले जाना, सो ग्रेविटी से ले जाएंगे और उसको वो जो गड्ढे बनाए हैं, जो नालियां हमने बनाई है, उसमें ये पानी छोड़ेंगे ताकि उसमें से वो जमीन में परकोलेट होके वो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाएगा। सो दैट इज द सेकंड मेथड। थर्ड इज द पॉन्डिंग ओवर द लार्ज एरिया। हमारे पास में यदि बहुत ज्यादा जमीन अवेलेबल है तो उसके ऊपर में ये बरसात का गिरा हुआ पानी उसमें रोकेंगे और उसको फिर जमीन के अंदर परकोलेट होने देंगे। दिस इज बीइंग अचीव्ड थ्रू सब मेथड्स, दैट इज द अलोंग द स्ट्रीम चैनल। यानी नदी नाले जो बहते हैं, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करके, लाइक द चेक डैम्स, द नाला बंड्स, the water is being obstructed to flow to the sea or the ocean, and that obstructed water is being percolated or infiltrated into the ground. Again, one of the spreading method. Another is vast open land or terrain of the drainage basin via percolation tanks. यदि कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है तो वो नदी या नाले के ऊपर में एक आधा तालाब बनाया, जिसको परकोलेशन टैंक करके बोलते हैं, और वो तालाब में यदि पानी रोक के रखा तो वो पानी परकोलेट होगा और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर टेबल को या पीजोमेट्रिक सरफेस के माध्यम से, पीजोमेट्रिक हेड को बढ़ाएगा, है ना, परकोलेशन सरफेस के माध्यम से। And another third method of the spreading type is modification of the village tanks as recharge structures। ना, आप में से बहुत लोगों के एरिया में, आपका जो एरिया है भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हर छोटे मोटे गांव में तालाब है। बोड़ी बोलते हैं आपके एरिया में उसको, बोड़ी बोड़ी, या इंग्लिश में उसको माजी मालगुजारी टैंक, माजी मालगुजारी तालाब करके भी बोलते हैं, मामा तालाब करके बोलते हैं। माजी मालगुजारी टैंक आपके एरिया में है, आपको मालूम है, या आपके लोकल लैंग्वेज में उसको बोड़ी करके बोलते हैं, बोड़ी, या हमारे टेक्निकल इसमें हम उसको विलेज टैंक करके बोलते हैं। खेड़े के तालाब, खेड़े गांव में छोटे छोटे तालाब हर गांव के पास में हमारे गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, अगेन टू मेक अवेलेबल दी वाटर रिसोर्सेस। तो ये जो तालाब है, ये तालाब को, इसमें का जो सिल्ट है
गाड़ बोलते हैं, उसको निकाले, उसमें तालाब में गड्ढे बनाए बड़े बड़े, वेल्स किए, are the ways if we create which will may allow to percolate the water into the ground and again reach to the reservoirs or the aquifers and will recharge. These are the some methods of the covered under spreading method. कुछ दो तीन मेथड हम इसमें से समझ लेते हैं. स्प्रेडिंग मेथड में पहला है चैनल स्प्रेडिंग. चैनल यानी स्ट्रीम, नदी या नाला एखादा. ये चैनल में पानी को कैसे रोकना, कैसे स्प्रेड करना ताकि वो रुका हुआ पानी जमीन के अंदर परकोलेट होगा. रोका नहीं तो ये स्ट्रीम में से बह के चले जाएगा. ये स्ट्रीम में से बड़े स्ट्रीम में जाएगा, बड़े से और बड़े में जाएगा और आखिरी में समंदर में जाके मिलेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये नदियां जो है, ये नदियां में ऐसे एल शेप बंड नदी के लेंथ में बनाते हैं. along the length of the river or the stream, the L-shaped bunds are constructed as shown here into the sketch. Bunds are nothing but the obstructions or the walls. Maybe these obstructions may be of the concrete or the masonry or maybe soil, made up of the soil. तो ये बनाएंगे ताकि पानी बहते बहते, जो पानी स्ट्रीम में से बह रहा है, it will require more path, it will require more length to move from one place to another and it will take more time into the stream. ये नदी में वह रहने के लिए ज्यादा समय लेगा और उसके कारण percolation बढ़ेगा और natural recharge will be achieved. Then again another method, the first is the channel spreading we have discussed. Another method is surface spreading. इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये स्ट्रीम है, एक आधी नदी है, ये बहते हुए नदी में से either perpendicular to the stream some ditches or some furrows या नालियां बोलेंगे हम, ये नदी में से एक्सकवेट की जाती है. नदी में से ये नालियों के माध्यम से, ये फरोज या पीट्स के माध्यम से नदी का पानी बाहर निकाला जाता है. And then it is brought over the land, over the surface, other than the channel or the river surface. Either it is stored into the small ponds or small reservoirs, and it is also injected into the wells. जो भी ये जो डाइवर्शन ट्रेंचेस है, डाइवर्शन ट्रेंचेस, डाइवर्शन पीट्स, डाइवर्शन फरोज, ये दो तीन वर्ड है नालियों के लिए. खड्डे यानी पीट्स हो गए, लेकिन फरोज, डाइवर्शन, streams, etc., which are constructed or which are excavated perpendicular to the regular flowing river. Water is being taken out through these furrows and is being allowed either to be accumulated in certain small ponds or certain recharge trenches are again excavated perpendicular to this main trench or main furrow, or this water through these trenches or these furrows which is taken out from the river is injected into the well. कुएं में छोड़ दिया जाता है, which will reach to the groundwater and recharge to the groundwater table.
There is another method wherein this water is being flooded over the land. बहुत ज्यादा पानी है तो वहां पे परकोलेशन के ऐसे ट्रेंचेस, रिचार्जेबल ट्रेंचेस या वेल्स में छोड़ने की बजाय जमीन के ऊपर में उसको स्प्रेड कर देना वो पानी को, तो उसके बाद में वो पानी धीरे धीरे जमीन में इनफिल्ट्रेट होगा, परकोलेट होगा और उसके कारण ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा. इन सर्टन कैचमेंट एरियाज और इन सर्टन बेसिन्स जो लैंड है, जो सॉइल है, उसकी जियोलॉजी स्टडी करके परमिएबल स्ट्राटा है यदि वहां पे, तो छोटे छोटे टैंक बनाए जाते हैं, छोटे बंधारे बनाए जाते हैं और इसमें जो पानी स्टोर होता है वो पानी जमीन में परकोलेट होता है, उसको परकोलेशन टैंक करके कहते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज. आपके भी एरिया में, खेड़ों पहाड़ों में ऐसे परकोलेशन छोटे टैंक बनाए जाते हैं. वो टैंक का वाटर जनरली इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ ऐसा एखादा बंधारा बना दिया जाता है छोटा सा, नदी के ऊपर में, नाले के ऊपर में, नाले पे ही रहते हैं जनरली. और जहां की जियोलॉजी ये परमिएबल स्ट्राटा है, जहां पे पानी परमिएबल परकोलेट होता है जमीन के नीचे, ऐसे एरिया में जनरली ये टैंक बनाए जाते हैं ताकि वो पानी परकोलेट होके ग्राउंड वाटर टेबल को या ग्राउंड वाटर को रिचार्जिंग में मदद करेगा. ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं. कल हम आगे का जो है चेक डैम्स एंड द नाला बंड्स एंड द अदर मेथड्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड.